Hello children, welcome to Devati Modi Public School, Class 4th, Subject Science, Chapter 7, Green Plants, the Food Producers. In this chapter, children, you will know why the plants are green in color and why they are known as food producers. You will also know that what are different parts of leaf. By the end of the chapter, you will know that how plants and animals are depend on each other. So, let's begin the chapter. Green plants, the food producers. बच्चों, हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हैं and most of the plants are green in color. They have different type of leaves which are different in shapes and sizes. But have you ever noticed that why the plants are green in color? क्यों लीफ ग्रीन होती है या बाकी पार्ट्स ग्रीन होते हैं? Children, that's the reason here. Because the plants have special substance in their leaf. And this special substance is called chlorophyll. Because of this chlorophyll, the plants are green in color. And इस chlorophyll की वजह से ही plants अपना food बना पाते हैं. That's why they are called as food producers. जिन plants में उनकी leaves में chlorophyll नहीं होता है, उनका कलर ग्रीन नहीं होगा and they will not be able to make their food. That's why plants with chlorophyll can make food, others cannot. Animals अपना food खुद नहीं बना सकते हैं. They depend on plants. Food making in plants. Children, plants जब अपना food बनाते हैं तो that process is called as photosynthesis. Photo means light and synthesis means to put together. It means the photosynthesis is a process in which plants make their food by using sunlight, carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll. It means जब प्लांट्स में लीफ के ऊपर सनलाइट आती है तो उस सनलाइट को क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में मिल करके प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं एंड दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर. So, children, photosynthesis is done only in the presence of sunlight. और दूसरी किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइट में प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं. They require only sunlight. Let's know here about different parts of a leaf. बच्चों, हम अपने चारों तरफ डिफरेंट शेप एंड साइज की लीव्स देखते हैं बट सभी लीव्स में बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक पार्ट्स सेम होते हैं. व्हाट आर दीज? लेट्स फाइंड आउट. Here is a green leaf. The flat green part that you see here is called as leaf blade. This is also known as lamina. This leaf is attached to the stem with the help of a thin stalk. This stalk is also called petiole. Petiole helps in bringing water and minerals from the stem and it supplies to the rest of the part of the leaf. In the leaf,
you can see a thick line up to the tip of this leaf. This thick line is called as midrib, and from this midrib some small branches arises on both the sides. These are called as side veins. Midrib and side veins लीफ के रेस्ट ऑफ द पार्ट को मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो गिव शेप एंड सपोर्ट टू द लीफ. On the surface of the leaf, there present stomata. These stomata are tiny pores. ये होल होते हैं and by their opening and closing. जब स्टोमेटा ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं तभी इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है. इट मीन्स जब स्टोमेटा के होल्स ओपन होंगे तो रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड नाउ that stomata plays very important role in photosynthesis and also in respiration for the plants. Leaves, the kitchen of plants. जैसा कि अभी आपको मालूम हुआ कि प्लांट्स में लीव्स के अंदर ही फूड प्रिपेयर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब क्योंकि लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ओनली एंड द रॉ मटेरियल्स दैट दे रिक्वायर आर सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट से एनर्जी मिलती है लीफ को एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल. द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स एंड सप्लाई टू द स्टेम एंड फ्रॉम स्टेम टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं होती है जो प्लांट्स के लिए उनके रिक्वायरमेंट को फिल कर सके. सो जो एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं. दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो व्हेनेवर द प्लांट्स मेक देयर फूड in the process of photosynthesis, they make food in the form of sugar or starch. How plants use their food? Generally, जब एनिमल्स फूड बनाते हैं, एनिमल्स जब फूड लेते हैं तो उनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और फैट्स. ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी जो एक्सेस फूड होता है वो उनके डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है एंड दीज डिफरेंट पार्ट्स कैन बी सीड्स लाइक आमंड, बादाम, काजू, पिस्ता. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीड्स जिसे हम खाते हैं एज अ फूड. फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फूड फ्रूट में स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ऑल दीज आर द fruit part of the plant. In some plants, food is stored in the stem. For example, sugarcane, potato, ginger, all these are the stems. ये stems होती हैं. इनके अंदर प्लांट का एक्सेस फूड स्टोर होता है और हम
इन्हीं पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। In some plants, food is stored in the form of leaves, in their leaves. So leaves के अंदर कुछ फूड स्टोर हो जाता है एंड द एग्जाम्पल्स आर स्पिनिच, कैबेज, फेनग्रीक, मस्टर्ड. All these are the examples of leaves. In some plants, food is stored in their roots. Example, carrot, radish. And these roots are eaten as raw as well as cooked food. So children, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स सारा फूड अपनी डेवलपमेंट में या ग्रोथ में यूज़ करे. जो उसका एक्सेस फूड होता है वो उनके डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है एंड वही पार्ट फिर एनिमल्स खाते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है. The food that is stored in different parts, it is in the form of starch. Children, do you know only the sun is the ultimate source of energy on the earth? During the process of photosynthesis, the sun's energy is trapped in the form of food in plants, and this energy is transferred to other animals by taking food from the plants. It means जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस फूड में, वही एनर्जी बाकी एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है जब वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं. इन दिस वे एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स and sun provides the ultimate source of energy on this earth. Let's see here some activities to prove that plant need chlorophyll, sunlight in their leaves, and they store their food in the form of starch. Activity number 1. Activity के लिए what are the requirements? We need a coleus leaf. Coleus एक प्लांट है जिसमें लीफ पूरी ग्रीन नहीं होती है, उसका कुछ पार्ट ग्रीन होता है एंड कुछ पार्ट उसका नॉन ग्रीन होता है. We need a beaker, a lamp, alcohol and a container or watch glass and few drops of iodine solution. Iodine एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन है जिसे हम प्लांट्स में सनलाइट की प्रेजेंस के लिए यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी. लीफ को सबसे पहले बॉईल करते हैं सिंपल वाटर में. आफ्टर दैट इट इज़ बॉइल्ड इन एल्कोहल. एल्कोहल में बॉईल करने का पर्पस है कि लीफ का जो ग्रीन कलर है दैट इज़ क्लोरोफिल, उसको रिमूव करना. जब लीफ को एल्कोहल में बॉईल कर देते हैं देन इट इज़ completely colorless. After that, the leaf is taken out in the watch glass and few drops of iodine solution डालने के बाद हम देखते हैं कि लीफ का कलर ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है. इट मीन्स जहाँ पर लीफ का कलर ग्रीन था, इट मीन्स जहाँ पर लीफ में क्लोरोफिल था उसकी वजह से उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया. बट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लीफ जो नॉन ग्रीन था दैट डजंट चेंज इनटू blue black color. It means it shows that leaves have chlorophyll in them. Activity 2. It shows that sunlight is needed for photosynthesis. The requirement is same as in the activity 1. But here we need a potted plant instead of taking leaf.
यहाँ पर हम पॉटेड प्लांट को सबसे पहले कुछ आवर्स के लिए 24 आवर्स के लिए हम इसे अंधेरे में रखेंगे. आफ्टर दैट वी विल ब्रिंग दैट प्लांट आउट एंड उसकी एक लीफ को डार्क कलर से, डार्क स्ट्रिप से हम उसको बांध देंगे. आफ्टर दैट द लीफ को तोड़ करके उसको फिर से बॉईल करेंगे एंड आफ्टर बॉइलिंग इन अल्कोहल द कलर विल कम आउट. जब लीफ का कलर पूरी तरह से निकल जाए तब हम एक वॉच ग्लास में लीफ को रख कर जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं देन अगेन द लीफ टर्न्स इट्स कलर इनटू ब्लू ब्लैक. बट जो पार्ट हाइड कर दिया गया था ब्लैक स्ट्रिप से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. इट मीन्स प्लांट नीड सनलाइट फॉर देयर photosynthesis. Activity number 3 to test the presence of starch in leaves. Plants जो अपना food बनाते हैं that is stored in the form of starch. By this activity it is proved. In the process, leaf is first boiled in simple water. After that, it is again boiled in alcohol so that its color come out. After that, it is washed properly in the boiling water and after that in simple water. After washing it, the leaf is applied by few drops of iodine solution in the watch glass. Again, the leaf is turned into blue black. But why? Because of the presence of starch in them. It means जो leaf के अंदर starch होता है it reacts with the iodine solution and gives the color blue black. अगर लीफ में स्टार्च नहीं होता तो उसका कलर चेंज नहीं होता. So it shows that food is stored in the form of starch in plants. Some special plants. Children, as you know now कि सभी plants mostly green color के होते हैं but कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें chlorophyll नहीं होता है. And that's why they are not green in color, they are colorless. The plants that don't have green color, they are called as non-green plants. And such plants cannot make their food. They depend on others. Example, mushroom, molds. ऐसे plants dead and decayed material के ऊपर depend होते हैं. But some plants they depend on the living plants. Such type of plants also cannot make their food, and for their food when they depend on living plant they are known as parasitic plants. ऐसे plants जो दूसरे living plants के ऊपर depend रहते हैं लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकते they are known as parasitic plants. These plants not depend on dead and decay but सिर्फ ये लिविंग प्लांट्स के ऊपर ही क्लाइम करते हैं और उन्हीं से अपना फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं. Few plants like croton as you can see here, they have colorful leaves but they can make their food because the chlorophyll is present in these leaves. in जो लीफ होती हैं ये इनके कलर्ड लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल छुपा होता है. दैट्स वाई दे कैन मेक देयर फूड. Interdependence of plants and animals. Children,
In the process of photosynthesis, plants give out carbon dioxide. This carbon dioxide is used up by the animals for their respiration. And in the same way, the animals in the process of respiration give out give out carbon dioxide, and this carbon dioxide goes in the atmosphere. It means the cycle of this uh, giving out carbon dioxide by the animals and taking in carbon dioxide in the process of photosynthesis by the plants continues, goes on. So we can say plants and animals depend on each other for their need. इसके अलावा प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सीड डिस्पर्सल. जब तक उनके सीड्स डिस्पर्स नहीं होंगे उनकी प्लांट्स की जनरेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. एंड दे शुड बी स्कैटर्ड. एंड स्कैटर करने के लिए दे डिपेंड ऑन animals. So, in this way, plants depend on animals, whereas animals depend on plants for their food and for oxygen in the process of respiration. इस तरह से अगर हम देखें तो plants and animals अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. एनिमल्स को जो एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स. सो वी कैन से प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. इन दिस होल प्रोसेस the energy is transferred from one to another. For example, plants make their food in the process of photosynthesis, and when animals take their food from the plants, this energy is transferred to the herbivores, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहने वाले एनिमल्स होते हैं. When these herbivores are eaten by any carnivore, then in the form of food it is transferred to the other animal or carnivore. In this way, we can understand that the transfer of energy continues from grass to herbivore animal and herbivore to carnivore animal. This makes a sequence of eating. And इस तरह से जो ये सीक्वेंस बनता है from grass to herbivore, herbivore to carnivore, and carnivore की जब डेथ होती है तो as a food they are also eaten by decomposers. So this process goes on and it makes a chain in the atmosphere. This is called as food chain. If the number of animals increases, plants may not be able to supply enough food and oxygen to all animals. बच्चों, अगर हम ये सोचें कि इस अर्थ के ऊपर सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स हों तो वो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे. देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, बिकॉज एनिमल या प्लांट किसी की भी अगर पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी देन द बैलेंस विल नॉट रिमेन इन द नेचर. इस नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दे आर कंट्रोल्ड एंड इफ़ एनी वन ऑफ देम, सपोज करिए प्लांट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं
तो दे विल नीड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फुलफिल करने के लिए फिर एनिमल्स के नंबर कम हो जाएंगे. इन द सेम वे इफ एनिमल्स आर इंक्रीज, देन द एनिमल्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए प्लांट्स कम पड़ जाएंगे. तो इस तरीके से नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. सो टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, द sequence of eating or the sequence of transferring energy from one to another is very important, and that's why this by this food chain, the number of animals and number of plants are controlled in the nature. Many projects and programs are going on to protect the wildlife and plant life. Wildlife animals are given special protection under the Wildlife Protection Act. Programs like Van Mahotsav, Chipko movement, Apico movement to save plants are gaining popularity. Thus, the sustain life on the earth. A balance in nature has to be maintained. That's all, children, in this chapter. Thanks for watching this video. Hello, children.